Good morning, all of you. You all are welcome in the e-learning classes of the Sacred Heart School. Today in this video, we will discuss about the lightest known elements of the Mendeleev's periodic table, that is hydrogen. And this hydrogen is the one of the unique element in the Mendeleev long form periodic table. Their position is not justified yet, or you can say the position of hydrogen is a kind of the limitation in the long form of the periodic table. So in this video we will discuss about the properties of the hydrogen and their significance in our chemistry. And this hydrogen is able to form the n number of compounds. So one by one we will discuss and all the properties and the characteristics of the hydrogen. Now I'm going to start the unit hydrogen. This hydrogen is the symbol is H and the atomic mass is 1.0078 and the atomic number is 1 for the hydrogen. In this way, this hydrogen is the only element which having only one proton in their nucleus, which having only one electron in their outermost shell, and this hydrogen is a unique element which avoid the octet rule and it completed their duplet only. So we can say this hydrogen is the one of the important element of the Mendeleev's periodic table. And in this periodic table, one by one we will discuss about the complete properties of this hydrogen. And first of all, we are taking here this position. The position of the hydrogen is quite controversial because of the one electron in the electronic configuration, and this hydrogen can form the unipositive element. What do you mean by the unipositive element? By the loss of the one electron, this hydrogen can form the H positive ion, and this H positive ion formation of the hydrogen and is responsible for the formation of various compounds. So this hydrogen can combine with the electronegative element and they can form the compounds like as the HCl. They can form the compounds like as H2O, and this H2O is one of the most versatile compound of the hydrogen is there. So first of all, we are discussing the position of hydrogen as the S block element. Why the hydrogen should be placed in the S block element? So basically, on the basis of the electronic configuration, all those electrons in which the last electron fall down in the s orbital, that known as the s block element. So hydrogen must be placed along with the alkali metal because the only electron of the hydrogen is present in the s orbital. So hydrogen is the first element in the periodic table. It has a resemblance with the alkali metal which lose one electron to form the unipositive ion, ऐसा हाइड्रोजन भी करेगा और एज वेल एज इसकी सिमिलरिटी हेलोजन से भी होती है. तो इस पार्ट को हम सेपरेट डिस्कस करेंगे. इन द कंपाउंड्स लाइक एज द हाइड्राइड्स, the hydrogen can exist in the H negative ion which can gain one electron to form the uni negative ion. So this position is quite controversial, and still this position is controversial. We cannot conclude the position of hydrogen as a alkali or as a halogen. तो इसको कहाँ रखा जाए, इस बात को लेके अभी तक कंट्रोवर्सी है. हाइड्रोजन फॉर्म्स द वेरियस ऑक्साइड्स, it can form the various halides, it can form the various sulfides there. However, unlike as the alkali metal, it has a very high ionization enthalpy. What do you mean by the ionization enthalpy? If you want to lose one electron from the hydrogen, and this phenomena is quite difficult because it has the only electron. अगर आप इसको एक रिमूव करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, and so ionization enthalpy of the hydrogen is very high, and by the loss of one electron it can form the H positive ion. So on the basis of this property, hydrogen should be considered as the metal. You know what are the metals? जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, जो मेटेलिक कैरेक्टर को शो करें, जो यूनी पॉजिटिव आयंस को बनाएं या डाई पॉजिटिव आयन को बनाएं, आप उनको मेटल्स बोलते हो. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, दिस हाइड्रोजन must be considered as the alkali metal. Like halogens, it forms the diatomic molecule. You know, chlorine molecule is there, F2 molecule is there, Br2 molecule is there,
I2 molecule is there. Like as these group 17 element, this hydrogen also exists as the H2 molecule. So on the basis of this similarity, and this hydrogen must be placed along with the group 17 element. One more point is there. All the 17 group element required only one electron to attain the noble gas configuration. Like as this one, hydrogen also required one electron to attain the stable configuration. The general electronic configuration ऑफ द हाइड्रोजन इज 1s1। तो इसको इनर्ट होने में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये प्रॉपर्टी ग्रुप 17 से मैच करती है। सो इसको ग्रुप 17 के साथ प्लेस करना चाहिए। तो दोनों प्रॉपर्टी आपको मिलेंगी हाइड्रोजन के अंदर एज अ ग्रुप 17 एलिमेंट और एज अ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट लाइक एज अ अल्कली मेटल। तो वन बाय वन we will discuss about this complete description. So this is the basic position of the hydrogen, where you are placing here this hydrogen, first element of the alkali metals, and these are the 17 group element. First element is fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. तो this is the group 17 element और this is the group first element। तो दोनों के साथ सिमिलरिटी का अपीयरेंस आपको मिलेगा हाइड्रोजन के रेफरेंस में। तो दिस इज द बेसिक पोजीशन of the hydrogen that you can justify here. Clear? And this position, it is not attached with the alkali metals. थोड़ा सा difference आप notice करेंगे, and this difference is because of their controversial position. And this hydrogen is said to be quite controversial because इसमें दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती हैं। ये मेटल भी है, ये नॉन मेटल भी है, ग्रुप 17 एलिमेंट की तरह। तो इनका बेसिक डिस्क्रिप्शन इसको कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। Now we are discussing the isotopes of the hydrogen. You know the element can exist in the various types. This is 1s1, 1h2, 1h3. These are the three specific hydrogen is there. The three types of the isotopes are there, and these isotopes are. So in this way, hydrogen having the three isotopes 1s1, 1h2 and 1s. तो दिस इज प्रोटियम, दिस इज ड्यूटीरियम और दिस वन इज ट्राइटियम। एंड ये तीनों ही नेचर के अंदर मिल जाते हैं। आप वाटर को जब आप स्टडी करोगे तो उसमें प्रोटियम भी प्रेजेंट होता है H2O के अंदर, उसमें ड्यूटीरियम भी मिलेगा H2O के अंदर, उसमें ट्राइटियम भी मिलेगा H2O के अंदर। बट द पोजिशन एंड द क्वान्टिटी ऑफ ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम इज वेरी लेस। हालांकि प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी है, सभी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं, लेकिन इनकी पोजीशन आपकी अलग हो जाती है और इनकी प्रॉपर्टी का डिफरेंस भी होता है। तो इन दिस वे प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम आर प्रेजेंट इन अ कॉमन सोर्सेज। जितनी भी नेचुरल बॉडीज हैं जहाँ भी आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है इन अ नेटिव फॉर्म और इन अ कंबाइंड फॉर्म इन अ फॉर्म ऑफ द कंपाउंड्स, उन सभी कंपाउंड्स के अंदर प्रोटियम भी मिलेगा वेरी कॉमन फॉर्म, ड्यूटीरियम मिलेगा थोड़ी सी कम क्वांटिटी में और ट्राइटियम मिलेगा ट्रेसेस के अंदर। तो इन दिस वे दिस हाइड्रोजन कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ द आइसोटॉप्स एंड दीज आइसोटॉप्स इज प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। These isotopes differ from one another in respect of the presence of the neutron. Only hydrogen, ordinary hydrogen, protium has no neutron, and this deuterium also known as heavy hydrogen because it has one neutron and one proton, and this helium, tritium having the two neutrons inside the nucleus. तो in this way the positions के बेस पर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। ऑफ दीज आइसोटॉप्स ओनली ट्राइटियम इज द रेडियो एक्टिव इन नेचर एंड इमिट एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ द बीटा पार्टिकल। यू नो दिस ट्राइटियम shows the radio disintegration series. The loss of the mass take place from this hydrogen in a form of the beta particle. One beta particle, that is beta, or you can say minus 1 E0. If the loss of the one beta particle takes place from any atom, the atomic number decreases by 1 and no change in the atomic mass takes place. And this complete description you will discuss in next year in the chapter nuclear chemistry and physics. So basically in that segment you will discuss what do you mean by the alpha disintegration series, what do you mean by the beta disintegration series, and what do you mean by the gamma disintegration series. तो ये सारी की सारी सीरीज जो होती हैं ये आपके एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करते वक्त
शो होती हैं। जब रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना होता है तो किसी भी एलिमेंट से जो मास का लॉस होगा या तो वो अल्फा पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है या फिर वो बीटा पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है या फिर वो गामा पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। तो अल्फा का लॉस अल्फा डिसइंटीग्रेशन, बीटा का लॉस बीटा डिसइंटीग्रेशन सीरीज एंड गामा का लॉस गामा डिसइंटीग्रेशन सीरीज। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉस in a form of the alpha beta gamma, the properties of the element also changes. So we can say this hydrogen can shows the numerous properties. Since the isotopes having the same electronic configuration, they have almost the same chemical property. The only difference in the rates of the reaction mainly due to their difference enthalpy of the bond dissociation. तो पार्शल डिफरेंस इनकी प्रॉपर्टी में आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द डाई हाइड्रोजन। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन इन द नेचर, दैट इज द डाई हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस जो होती है ये डाई हाइड्रोजन के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है नेचर के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे अकरेंस की। एंड दिस डाई हाइड्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स। ध्यान दीजिएगा 70% हमारा यूनिवर्स हाइड्रोजन का बना होता है। वाई, हाउ यू कैन से दिस वन? बिकॉज इन द यूनिवर्स ऑल टाइप ऑफ द हेवनली बॉडीज मेनली मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, सन है, सारे के सारे ल्यूमिनस स्टार्स हैं, उनके अंदर जो मेन एनर्जी का सोर्स है एंड दैट इज ओनली द हाइड्रोजन। यू ऑल नो इन द सन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। In this nuclear fusion reaction, the two lighter particles of the hydrogen may combine together and they may combine to form the helium. And this fusion of the two H atom is responsible for the liberation of the tremendous amount of enthalpy in a form of the heat light. So basically, this phenomena of the loss of the energy known as radiation. So you can say in our surrounding in this universe, the natural radiation is taking place because of this hydrogen. Because all luminous object like as the stars and the sun and they all can emit the light due to the presence of the abundant quantity of the hydrogen. So overall, whenever you will see the whole universe, the more than 70% composition is made up of hydrogen only and remaining composition are other element are there. So this is a very important gas for us. अर्थ के ऊपर इसकी क्वांटिटी बहुत कम है लेकिन यूनिवर्स ये के अंदर आपकी हाइड्रोजन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। द जाइंट planet like as Jupiter, Saturn consist mainly of the hydrogen. ध्यान दीजिएगा हमारे सोलर सिस्टम के अंदर भी जुपिटर और सैटर्न पर अबंडेंस है हाइड्रोजन की। दिस हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन अ लार्ज क्वांटिटी, हाउएवर ड्यू टू इट्स लाइट नेचर इट इज मच लेस अबंडेंट, 0.15% ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो लगभग 1% इसकी क्वांटिटी है। Of course, in a combined form, it forms the 15.4% of the earth crust. Various compounds of hydrogens are there, like as this ammonium compounds are there, NH4. जहाँ जहाँ आपको H मिलेगा वो सब compounds हाइड्रोजन के हैं। ओशियंस के अंदर एंड सी के अंदर तो 15% से ऊपर इसका कंपोजिशन हो जाता है। In the combined form, besides in water, it form present in a plants, in animal tissues, in a form of the carbohydrates. CX H2XOX protein, this is polypeptides and a various hydrides. We have discussed the hydrides in the unit S block and including the hydrocarbons and many other important compound. तो हाइड्रोजन कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर हाइड्रोजन का अबंडेंस आपको ना मिले। तो कंबाइंड फॉर्म में ये हाइड्रोजन कैटायन के फॉर्म में, एनायन के फॉर्म में न्यूमेरस कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वी आर टेकिंग द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस dihydrogen, how this dihydrogen can be prepared. First of all, we have to see the preparations of this dihydrogen. So first of all, this is the laboratory preparation. If you will take the sulfuric acid H2SO4 and zinc is added there, then this is able to release yet displace this H atom. So the compound will be formed zinc sulfate and this H2 gas is liberated there. The liberation of this H2 gas is because of the reaction of the metals like as the zinc with the sulfuric acid, this is H2SO4. तो zinc and sulfuric acid की रिएक्शन से आप लैब कंडीशन में सिंपल वे में H2 गैस को प्रोड्यूस कर सकते हो. Whenever this H2 gas is burned and it form the pop sound. The pop sound liberation is a sure indication the gas eliminating, liberating
that is H2 gas is there. It can also be prepared by the reaction of the zinc with the alkali. तो चाहे आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए या कोई स्ट्रॉन्ग बेस लीजिएगा, जिंक की रिएक्शन आप NaO से कराएंगे तो ये बनाएगा Na2ZnO2 and H2 gas is also liberated in this particular reaction. तो very simple way H2 gas can be formed in the lab condition by very simple way by taking the reaction of the electropositive element like as the zinc, चाहे एसिड से रिएक्शन करा दीजिए या बेस से रिएक्शन कराइए, एंड सभी के साथ इनकी रिएक्शन कराने पर अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ H2 गैस की आपकी लिबरेट हो जाती है. सो वी कैन से दिस हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर इन द लैब कंडीशन इन अ सिंपल वे. एंड नाउ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द डाइहाइड्रोजन. Commercially, it can be obtained by the electrolysis of the water. By the process of the electrolysis, the acidified water can be cleaved out in a form of this H2 and the O2 gas. And because the abundant quantity of the water is present in our planet, so by passing the 440 volt current, 440 volt current, and you can break the acidulated water in the corresponding H2 and O2 gas. And high purity of the dihydrogen can be obtained by electrolyzing the warm aqueous barium hydroxide solution between the nickel electrodes. अगर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस के अंदर निकल इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करके abundant क्वांटिटी या हाई वोल्टेज को पास करोगे, एंड दैट टाइम दिस बेरियम हाइड्रोक्साइड dissociate to form the abundant quantity of the hydrogen. The purity content is very high of this type of the hydrogen because this is more than 95%. It is obtained by the byproduct of the manufacturing of the brine solution. जब आप सॉल्वे प्रोसेस के अंदर आपने पढ़ा है ये, जब आप ब्राइन सॉल्यूशंस के अंदर पास करते हैं तो वहां पर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में भी आपको H2 मिल जाता है. तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस and there are so many ways by which you can obtain this H2 gas. So this is the reaction that you have done in the S block element. The compounds like as NaCl. NaCl के aqueous solutions को आप brine solution कहते हो, और जब आप NaCl के aqueous solution में करंट पास करेंगे तो आपको H2 गैस मिलेगी, आपको Cl2 गैस मिलेगी और आपको NaOH मिल जाएगा. तो इन सभी कंपाउंड की प्रिपरेशंस बेसिकली करने के लिए आपका इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, एंड दिस होल प्रोसेस नोन एज कास्टनर कैलनर सेल. एंड इन दिस कास्टनर कैलनर सेल के थ्रू आप अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ H2 को भी प्रिपेयर कर सकते हो. तो इन द लैब कंडीशन एट कमर्शियल लेवल H2 कैन बी प्रिपेयर बाय सिंपल वे. एंड नाउ ए डेज द वेरियस ऑटोमोबाइल्स कंपनी आर वर्किंग ऑफ द हाइड्रोजन एज अ फ्यूल. When the whole quantity of the petroleum compound is depleted, that time we have only one fuel, that will be the hydrogen. और सारे के सारे vehicles हम हाइड्रोजन से ही पे चलाएंगे. और how this H2 can be prepared? इस H2 गैस की प्रिपरेशंस के लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को ही करना पड़ेगा. तो दिस इज द सिंपल वे फॉर द प्रोसेस ऑफ दिस H2 प्रिपरेशन दैट विल बी कमर्शियली इम्पोर्टेंट जब हम इन सारे फ्यूल का प्रिपरेशंस करेंगे इस तरीके से. रिएक्शन ऑफ द स्ट्रीम बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन विद द स्ट्रीम विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस H2 कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर. द मिक्सचर ऑफ CO and H2 इज कॉल्ड द वाटर गैस, एंड दिस वाटर गैस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ n नंबर ऑफ कंपाउंड. तो सिन गैस क्या होती है, वाटर गैस क्या होती है, इस तरीके से आप इनको इम्पॉर्टेंट. तो H2 गैस का CO गैस का मिक्सचर जो होता है आप उसको सिंथेसिस गैस के नाम से जानते हैं. वाई दिस गैस नोन एज सिंथेसिस गैस? बिकॉज n नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर बाय दिस वन. द प्रोडक्शन ऑफ द डाइहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड बाय द सिन गैस मिक्सचर एंड बाय एडिंग द सुटेबल कैटलिस्ट. इन दिस वाटर गैस shift reaction, carbon dioxide is removed from the scrubbing with the sodium arsenic solution. So this is the various method by which the H2 gas can be prepared in the laboratory condition or in the specifically conditions. Now some property of the dihydrogen. Physical property: odorless, colorless, tasteless gas, highly combustible, and taste is no taste is there in this water. Chemical property: chemical behavior of dihydrogen, and this gas is large bond dissociation enthalpy is very high.
सो इसको ब्रेक करना और एलिमेंट स्टेट पे लाना बहुत मुश्किल होता है. कैन वी प्रोड्यूस atomic hydrogen? Yes, why not? The atomic hydrogen can be produced at very high temperature by passing the H2 gas through the electric arc, and under the electric arc condition or by passing the UV radiation, this H2 molecule can be cleaved out in a corresponding H atom. So in this way H2 gas can be prepared in the corresponding in the negative form. So this is the basic points of the property of the hydrogen. Hydrogen having only one electron in the outermost shell, so the loss of only electron from the H positive ion, the gain of one electron can form the H negative ion hydrogen ion, and sharing can form the simple H2 molecule. तो सबसे यूनिक प्रॉपर्टी जो आपको H2 गैस की मिलेगी वो आपको कैटायन के फॉर्म में भी मिलेगा, वो एनायन के फॉर्म में मिलेगा, वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिल जाएगा. तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट यूनिक पॉइंट of this hydrogen gas. So this H2 gas becomes very important and their property becomes important for us. In the next segment we will discuss about some of the compounds of the hydrogen, and we will also justify their position and compounds like as hydrides, and their detailed description we will discuss in the next video. Thank you.